So what is up everybody, I'm Nitya, welcome back to my channel. In this video we are going to learn how to make cinematic videos with just using your smartphone. गया इसको साइड करते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर सब्सक्राइब बटन दबाओगे जब मेरी वीडियोस ऊपर जाएंगी और ऊपर जाएंगी तो मेरे पास पैसा आएगा और पैसा आएगा तो मेरा फ़ोन ठीक होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? So guys, let's start with the basics. So as you already know, there is a camera in your smartphone. You know na? Okay. So let's start with the manual mode. What is the manual mode? There is a mode in your camera app which is called manual or pro mode, or there are lots of names of that, but there you can see it looks like this. There are different options like shutter speed, ISO, exposure, white balance. Okay, so this thing is called the manual mode, and what it helps you to control all those things. But ये चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता कि कैसे आप शटर स्पीड को, ISO को और वाइट बैलेंस को कंट्रोल करें। इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स देन भाई हो गया यार, इससे ज़्यादा क्या करोगे। तो मैनुअल मोड एक तरह से आपका बेस्ट फ्रेंड है सिनेमैटिक वीडियोस बनाने में, जो कि आपकी हर टाइम मदद करेगा। जो भी जितनी बैड सिचुएशन होगी, कभी लाइट कम होगी तो यू विल इंक्रीज द ISO, सो इट विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टिप। ये मैं कुछ ऐसी थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ क्योंकि आप स्मार्टफोन में अपनी वीडियो बनाने जा रहे हो। तो फर्स्ट, एयरप्लेन मोड को हमेशा ऑन रखना, मतलब जब भी आप शूट करो तो नोबडी डिस्टर्ब्स यू। एंड यस, मेक श्योर यू रिकॉर्ड इन 1080p or 4K, but make sure there is 60 FPS, not 30 FPS, not 24 FPS. Use 60 FPS instead. Okay, I will let you know why we use 60 FPS further in this video. And check the storage. Obvious, if you are shooting in 4K then storage is main concern. भाई बहुत ज़्यादा storage लेती है 4K. And yes, check those things and then start filming your videos. Now let's head towards the next point. Let's get to another point. So having a good story is also very important to making a cinematic video. So let me give you an example. So अभी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने एक स्टोरी थी कि मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, पार्क में जा रहा हूँ खेलने बैडमिंटन, और ये सब कुछ एक स्टोरी थी जिसको वो स्टार्टिंग टू एंड फॉलो कर रही थी। तो यही आपको ध्यान रखना है whenever you go to shoot something, make a story first and then choose the transition, choose the movement, choose the shots which you have to take first, and then you go and shoot all the video. Focus on the story more than the shots, obvious that. And that's it for this point. Let's move to the next point. So the next tip is slow-mo. Remember we talk about shooting in 60 frames per second, while जबकि जितने भी आप ये मूवीज़ देखते हो, सिनेमैटिक वीडियोस देखते हो, ये सारी 24 FPS में एक्सपोर्ट की जाती है, बिकॉज 24 FPS इज़ द मिनिमम रेट। व्हाट इज़ FPS? लाइक फ्रेम्स, मतलब 20 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड मिनिमम होते हैं, जिससे हमारी आइज़ को लगता है दैट इट्स मूविंग, समथिंग मूविंग। ओके, सो those videos are in 24 FPS, so they will give some motion blurs and that it looks real. तो अब आप बोलोगे कि आपने पहले क्यों कहा कि 60 FPS में शूट करो। That is because कि जब आप उस वीडियो को एडिट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उस 60 FPS को स्लो डाउन करके 24 FPS बना सको, तो it will look very smooth in video and it looks great when will you see it. Okay, so let me show you in Premiere Pro how you can do slow-mo in Premiere Pro. So it's just 1 minute tutorial. In this tutorial, let's start. So this is how you do that in Premiere Pro. Import your footage in 60 frames per second, then select the speed, then right click on the footage and put it as 45 or 50. Put the speed at 45 or 50. This will slow down the footage, but the footage is still a bit choppy, so you can right click and select optical flow. It creates new frame and makes the footage look more smoother. And when you are export, make sure you export it frame rate is 24 FPS, which makes the footage look more cinematic. And now another thing I want to talk about, having a workflow. A workflow is kind of like
यू फर्स्ट राइट द शॉर्ट्स। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया था कि आपको एक स्टोरी बनानी है, स्टोरी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट्स लिख लो पहले। जब भी whenever you go out in a field to try something out, first put some shots और put some reference कि मुझे वहाँ जाना है और ये शॉट्स लेने, ये शॉट्स नहीं लेने, कि इससे आपके बाद में टाइम भी बचेगा। when you are looking for good shots for your timeline, so वहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा और आपका स्टोरेज स्पेस भी बचेगा। Okay guys, the final thing we are talking about is the power of post production. I know you don't know, like whenever you shoot something, it doesn't look good. मेरे साथ भी होता है भाई, मैं कुछ शूट करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब भी मैं शूट करता हूँ, बट whenever I try to edit it and after I edit it looks much I mean बिल्कुल अलग वीडियो बन जाती है भाई। तो never underestimate power of post production। आपने कुछ भी शूट किया हो, चाहे वो आपको स्टार्टिंग में बेकार लग रहा हो, लेकिन आफ्टर कलर ग्रेडिंग, आफ्टर एडिंग सिनेमैटिक बार्स, आफ्टर एडिंग म्यूजिक इन दोज वीडियोज, आफ्टर एडिंग साउंड इफेक्ट्स एंड डूइंग लॉट्स ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ, एंड आफ्टर दो स्टफ योर वीडियो श्योरली लुक्स गुड। That's all you need to make a good cinematic video with you using your smartphone। मेरा तो ख़राब हो चुका है, बाकी अब अपना देख लो और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर, sayonara, बाय बाय।